डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि nobody has put an FIR against the Godman. Everybody is talking about the Sevadars who violated the norms, the fact that the cavalcade went away from there. It was the cavalcade that was responsible for creating the stampede, people falling into the ditch. But no FIR, no arrest so far. Navika ji, namaste. But yes, it is most unfortunate incidents. Hope our Prime Minister, CM has condolences for the affected family. But yes, I also surprised why there is no FIR registered by the police. So I am not giving any bail to anyone, and there is clear-cut guidelines for any such type of event, that there must be fire brigade, there must be ambulances, there must be nearby hospital must be informed well, and appropriate safety measure and security forces should be there. I am not bailing out the administration even. Both are equally responsible in my opinion, and stringent action must be taken, will be taken by the government. Our CM has clearly said about this thing, why the government... Dr. Mishra, your party is in government. Yes, ma'am. Questions are being asked. You can't take a position saying कि कुछ करना चाहिए, कब होगा पता नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ पता नहीं, FIR में नाम क्यों नहीं है पता नहीं. ऐसे कैसे होगा? People, 121 people have died, and Ameek Jamai, administrative failure. Well, you don't need rocket science to understand that there was administrative failure. There was permission given for 80,000 people, 2.5 lakh people were there. The local administration, was clearly napping. They had no idea what was the local intelligence doing. Absolute failure. The hospitals were not equipped. There were no doctors there. Nobody was helping people who had been injured also. And look at the death toll, 121 people. But we're still asking questions. डॉक्टर कौशल जी की ये कहने से कि हमें पता ही नहीं है कि FIR क्यों नहीं हुआ, उसका नाम क्यों नहीं है, सैकड़ों लोगों की जो ज़िंदगियां, निर्दोष लोगों की जो गई है, आप सोचिए कि उनके घरों में कितना मातम का एक माहौल होगा. देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर का हाल है. आपको मालूम होना चाहिए कि ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी, उत्तर प्रदेश में इनको 007 जेम्स बॉन्ड कहा जाता है. कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे की कोई खबर होती तो अमिताभ यश को होती है. लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना, पूरे पुलिस महकमा सोया रहा. अब मुख्यमंत्री जी भी जो छोटी छोटी बात पे, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा नाविका में, जुमे की नमाज चाहे 50 लोग पढ़ें या कहीं पे 500 लोग पढ़ें, पुलिस फोर्स लगाई जाती है कि 25 लोग कहीं सड़क पे ना आ जाएं. सवाल ये है कि 60,000 की परमिशन के बाद 2 लाख 2.5 लाख लोग पहुंच गए. तो ऐसा तो है नहीं कि शासन प्रशासन को नहीं पता होगा. तो कौन लोग हैं जो इस हत्या के जिम्मेदार हैं, इस नरसंहार के जिम्मेदार हैं? ठीक है, वो जो भी गॉडमैन थे, वटेवर, उनका नाम क्यों नहीं वो कौशल जी बताएंगे. लेकिन ये पूरे तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो लॉ एंड ऑर्डर का, ये उनकी तरफ का पूरा फेल्योर है. क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर्स में, ब्राह्मण्स का फेक इनकाउंटर या OBCs का फेक इनकाउंटर्स, और हाई कोर्ट 50 बार इस पे सुमोटो कर चुका है. लेकिन उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आज भी मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं. लॉ एंड ऑर्डर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो समाजवादी पार्टी की सरकारों में क्या रहा है, शायद वो भी देश को पता है. बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पॉलिटिक्स. माय क्वेश्चन टुडे इज, रोहित अग्रवाल, very well meaning Dr. Kaushal Kant Mishra is saying कि होना चाहिए, है क्यों नहीं? It's been 36 to 40 hours since this incident took place. Why is there no FIR against Suraj Pal? Why are there no arrests? Isn't this the basic part of investigation when 121 people have lost their lives? Navika ji, first of all, from Rashtriya Lokdal, condolence to the families, condolence to the people who have lost their life in this accident, condolence to the every family whose person is no more with us right now. So this is a big accident, this is a big stampede, and we are equally aware about the things what are going on there.
immediately DGP and Chief Secretary is moved to the place, to the incident place, and they were camping last night. Sanjay Even Jha, the does that three help? ministers, Chief three Secretary state chale ministers. gaye hain, DGP chale gaye hain. Is that helping? You know, nobody knew that 2.5 lakh people were congregating. 2.5 lakh people. इतने तो किसी रैली पर नहीं आते किसी के लिए. This is more than that. But at rallies, political rallies, there is a battery of security personnel. Police is deployed because VVIPs are there. What about the hapless common man? No. I agree with you. Nee, Navika ji, there was Navika, is police. that question to me? Yes, escorting that the question is to you, Sanjay Jha. If you can give me 10 seconds. You know, Navika, let me tell you, this is such a terrible tragedy, Navika. Over 120 people dead, innocent people. I was watching one of the clips of a woman who lost her children. I mean, today, imagine the number of families who are grieving even as we are discussing it. So I do believe that this criminal negligence, who's going to be accountable? And ultimately, the buck needs to stop somewhere, right? I mean, people can't just make casual statements that this could be an alleged political conspiracy and try and divert attention on a matter which I think is so sensitive that we should all first and foremost apologize to the people who have suffered and those who are probably still recovering. So it's a very shameful level of political immorality that I think is lowered, I think, standards in our political. But I want to add one point. I want to credit the UP BJP spokesperson Kaushal ji, because he's the first BJP spokesperson I have met in the decency and the integrity to admit that the BJP could have done better or the administration of the state could have done better. So full marks to Dr. Kaushal for at least confessing that a lot needed to be done. Now he has the responsibility to make sure that Mr. Adityanath's government gets to the bottom of the matter and makes sure that justice is done to those who have been, I think, devastated for their entire lives. I think we all need to hang our heads in collective I come shame. back to you. Not one DSP, not SSP, nothing has moved. Nothing has moved. Nobody has been removed, suspended. Nothing has been done. I want to ask you, yes, sir, there will be a judicial inquiry. Yes, there will be a committee. Yes, 15 days में report आएगी. I'm probably 15 days, 3 weeks, 4 weeks. हर state में जब भी ऐसा कुछ होता है, इस तरह की committees बनती हैं. बदलता क्या है आम इंसान के लिए? आज देश को बता दीजिए कि 121 परिवार लुट गए. उनके घर वाले एक सत्संग के लिए गए और घर लौटकर नहीं आए. हम कर क्या रहे हैं? नाविका जी, जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हॉस्पिटल में जाकर के जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके वो बचाई जाती है. उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इसके साथ साथ हम एक्शन में भी आ रहे हैं, आ चुके हैं. आप ये देखिए जिस तरह से जब इंसिडेंस हुआ उसी रात को 3 मिनिस्टर वहां पहुंच चुके. सीएम अगले दिन खराब मौसम के बाद आज वहां पर थे. उन्होंने मरीजों से मिला, जिनके घर में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए उनसे मिले. इसके अलावा एसआईटी बनाई गई. एसआईटी के साथ साथ जिससे कि एसआईटी प्रॉपर काम करे उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी भी उसमें ऑर्डर की गई. आप ये समझिए कि हमारा संविधान यही कहता ना, किसी भी गैर जिम्मेदार आदमी को सजा नहीं दी जा सकती. एग्रीड, इसमें जो गॉडमैन है वो गिल्टी है. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब वहां पर ये इंसिडेंस हुआ उसके बाद भी वो आदमी भाग गया. आज वो गायब है, पुलिस इसके पीछे है. तो he is the most important culprit. Preliminary, my friend, why is his name not in the FIR? You're still calling him Godman? Well, Godman, of course not. For the common people who lost their lives, he's Suraj Pal. His name should be on the FIR and there should be teams going out. आपको तो सबको ही मिल जाता है ना, पाताल में हो, ऊपर हो, कहीं भी हो. ये नहीं मिल रहा है आपको. मीडिया की मदद चाहिए. मुख्यमंत्री जी ने भेज देते हम अपने रिपोर्टर आपके साथ. जैसे शायद हमारे रिपोर्टर ढूंढ पाए.